discuss about the first law of motion, Newton's first law of motion. According to Newton's first law of motion, if an object is at rest, it will remain at rest. If it is moved with uniform velocity, it will continue move with that velocity, that uniform velocity, until or unless any external unbalanced force is applied on it. Is it clear? अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो लेट मी डिस्कस अबाउट इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? Inertia is the inability of an object. This is the inability of an object to change its state of rest or motion. It means अगर कोई object rest में है, it will try to remain at rest. If it is in motion, it will try to remain in motion. For example, आप एक अलमीरा को फोर्स लगा रहे हैं, आप उसको आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आगे हो जाए, बट इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट. दिस इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट अलमीरा टू मूव इज कॉल्ड इनर्शिया. मोर द इनर्शिया, मोर द मास, मोर द इनर्शिया. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी. इसको हम एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल से, बहुत ही इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. इनर्शिया तीन टाइप की होती है. First is inertia of rest. Inertia of rest. Second is inertia of motion. And the third is inertia of direction. हम एक बस का एग्जांपल लेते हैं. While सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट. दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो लेट मी डिस्कस इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जब हम किसी बस में बैठे हैं या बस में खड़े हुए हैं एंड बस भी रुकी हुई है, व्हेन ड्राइवर सडनली स्टार्ट्स द बस, देन वी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. व्हाई? Because while standing in a bus, we are at rest because bus is at rest. And when suddenly driver start the bus will move and the lower part of our body will also move with the bus. But upper part of our body try to remain at rest. That's why we fall in backward direction. This is called inertia of rest. Now, next, inertia of motion. If we are in motion, we will try to remain in motion. For example, we are sitting in a moving bus or moving car and driver suddenly applies the brakes. We move in forward direction. Why? Because when bus or car is in motion, we will also in motion. And when driver suddenly applies the brakes, the car will stop, bus will stop, and lower part of our body, which is attached with the bus or car, will also stop. But the upper part of our body try to remain in motion. That's why we fall in forward direction. Inertia of direction. It means if we are moving in a particular direction, we will try to remain in the same direction. While sitting in a moving car, when driver suddenly takes a turn, we fall in the opposite direction. It is due to inertia of direction. Now we'll discuss about the further questions, further examples. First law of motion is when an object is at rest, it will try to remain at rest. If it is in motion, it will try to remain in same uniform motion until or unless we applied any external unbalanced force on it. First law of motion is also known as law of inertia. Law of inertia. And inertia, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी उतनी ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल, एक बस और एक कार में से किसका मास ज्यादा होगा? बस का. सो बस की इनर्शिया भी ज्यादा होगी. क्लियर? ओके, नाउ आई डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, some more examples. When